चलें बच्चों, so we are doing past papers of energetics in today's class. We already talked about the theory in the last class, and today we are moving towards MCQs, and you can see this on the screen. We have 3 MCQs right now. So I just want to ask the answer of first one from Hiba. Hiba, can you answer this better? B. B for ball, right? Yes. Okay, so that's right. You can see this. The diagram shows an energy profile diagram for a chemical reaction, both with and without catalyst. Which energy change is the activation energy for the catalyzed reactions? So, but we know that the activation energy is from reactant to the highest peak, right? This is what activation energy all the time. But this is the activation energy when you are not using catalyst. But when you use catalyst, so we know that the purpose of catalyst is always decrease the activation energy and speed of the reaction. So it definitely decrease the activation energy, and this will be the catalyzed reaction activation energy. Absolutely right. Good job. Then in the question number 2, which change is endothermic? So Huria, can you answer this, bete? C है शायद. C है शायद. Okay, so we know that endothermic is what? Endothermic is bond breaking. Endothermic is what? It is bond breaking. So wherever the bond is breaking, it should be the part of endothermic. So you can see this. This is not bond breaking. The molecules are going to be formed over there. This is the atoms combining together to form a molecule, and this is molecule dividing into atoms. So this is what? Bond breaking, right? So this should be the right answer. Very good, Huria. Then if you talk about question 3, जी बेटे. Sir, ये 2 A फिर क्या होगा? A is a combustion reaction, so it is exothermic. Okay, sir. Then if you could talk about MCQ number 3, bacho, so the energy profile diagram for a reaction is shown over here on the screen, and which statement is correct? So Abdul Rafe, can you answer this, bete? Yes, sir. Is it B? B. Okay, B. so you need to see this. B for ball, right? Yes, okay, sir. so anyone else that you want to share answer with me? Ali Aslan, can you answer? A. A. Okay, so just look at over here. What the MCQ is saying with us. Let's see. The activation energy for the reaction is Sorry. So you can see this. Activation energy is always from reactant to the highest peak, and this is H3 minus H1. This is the right answer. The activation energy for the reaction is H3 minus H2. This is not activation energy. ये तो activation energy नहीं है. Product से highest peak तो नहीं होती ना. Reactant से highest peak होती है. Right? Right, Right, बच्चों? sir, I got confused with the lines. कोई बात नहीं. आप गलत करेंगे तो सीखेंगे. That has no issue, बच्चों. So here we have further 4 questions, बच्चों, on the screen. You need to solve these 4 questions first, then I will answer you all these. Try to solve this first quickly. First answer है freezing and condensation. C. Okay, so C. ठीक है. So the question is saying which physical change are both exothermic? दोनों ही exothermic होने चाहिए. So we know that कि बच्चों अगर आपके पास solid से liquid में conversion होती है तो this is what? Endothermic. और अगर इसका backward reaction होगा तो it is what? Exo. तो freezing is exo, right? Absolutely right. You are absolutely right. And then आपके पास आप कह रहे हैं condensation again. Liquid से gas में जाएंगे तो ये energy absorb करेगा और gas में convert होगा तो this would be endo, और इसका backward condensation is exothermic. Absolutely right. So C would be the right answer. Very good. और वहाँ लिखा हुआ है evaporation. So the liquid से gas में जाते वक्त जो evaporation होती है, आपके पास ये energy absorb करके evaporate होते हैं, तो first answer तो नहीं हो सकता है. जितना solid से liquid में जाते हैं तो energy absorb होती है, वो convert होता है liquid में, तो ये भी melting वाला answer भी नहीं हो सकता है और melting वाला answer नहीं हो सकता है. C is the right answer. Absolutely right, Abdul. It's good job. चलिए ठीक है. MCQ number 5. Abir, can you answer बेटे? B. B for ball. Okay, let's see. So if they are saying that enthalpy changes when methane, butane, and octane are burned completely in oxygen, as shown, methane burn हो रहा है. Methane का मतलब होता है बच्चों एक carbon. You can see this. We have 1 carbon over here. So 890 kilojoules energy आपके पास क्या हो रही है? Evolve हो रही है.
और फिर C4 मतलब ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन, तो यू कैन सी दिस 4 कार्बन वाला कंपाउंड जब बर्न हो रहा है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और 8 कार्बन वाला जब बर्न हो रहा है तो इतनी रिलीज हो रही है। दे आर आस्किंग टू प्रेडिक्ट कि भाई अगर आपके पास 3 कार्बन होंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और 5 कार्बन होंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। जस्ट लुक एट ओवर हियर बच्चों, अब वो 3 कार्बन के लिए आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, एक ये ऑप्शन दे रहे हैं वो आपको, और एक ये ऑप्शन दे रहे हैं। 3 कार्बन जब बर्न होंगे तो इन दोनों में से कोई एक एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। सो आप देखें आपके पास फर्स्ट कार्बन की तो मौजूद है, ठीक है ना, सेकंड कार्बन की उन्होंने स्किप कर दिया, और थर्ड कार्बन की वो आपसे पूछ रहे हैं। तो जरा बताइए 1500 होनी चाहिए या 2200 होनी चाहिए थर्ड कार्बन की? 2200 सर। 200. एग्जैक्टली 1560 जो उन्होंने दी है वो डेफिनेटली किसकी होगी, वो सेकंड कार्बन की होगी। तो थर्ड कार्बन की आपके पास आंसर हो सकती है 2200, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। फिर बचे आपके पास इन दोनों में से कोई आंसर ना। अब आप देखें वो आपसे पूछ रहे हैं पेंटेन की, यानी 5 कार्बन की। तो जरा देखिए कि आपके पास जो 3 कार्बन 4 कार्बन है उनकी 28 है, तो उसके फौरन बाद वाली कौन सी होगी, 35 या 42? 35 sir. 35 sir. 35। तो इसका मतलब है प्रेडिक्शन में हमारे पास बी आंसर राइट होना चाहिए, राइट बच्चों और नॉट? Right sir. राइट सर। Right, sir. So question number 6, which change in condition increase the energy of particles in a reaction? जी, तो मुझे इसका आंसर बता सकते हैं आप अहमद जाफरी? Yes, Ahmad, can you answer this? Okay, so I think Ahmad is not there. may I? और जी आप बताइए। सर 7 का सी होगा। 6, I am asking about 6 बेटे। 60, yes sir, 60. Okay, so which change in condition increase the energy of the particle, and we know that the kinetic energy can be increased by increasing the temperature. So you can say that C should be the right answer. Very good, very good. Then question number 7, it's something very simple. We can just find it out by the graph. Aisha, what should be the answer of this, Bete? C C कह रही है Aisha. Okay, let's see. So the energy diagram represent a chemical reaction carried out both with catalyst and without catalyst. They are asking about what is the enthalpy change for the reaction. Catalyzed reaction, we know that we don't care about catalyzed or uncatalyzed in terms of enthalpy, because the adding of catalyst has no change on enthalpy, right? This is only for the speed up of the reaction. Activation energy, there is a changes on activation energy, but there is no change on enthalpy by the addition of catalyst. So let's see, enthalpy change is always the energy difference between reactant and product. So this is actually product B. and this reactant, right? So what should be the right answer? And head of the arrow should always be towards product, so it is downward, and we know that whenever the head is downward, it is always negative. So what should be the right answer? 100 minus 50 will give you 50, and it is exothermic reaction. That is right as B. Right, बच्चों? Right sir. राइट सर। उन्होंने आपको परेशान right. ये है by the word catalyze. अब ज्यादातर हम लोग जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ याद करेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है. So you always need to remember कि भाई catalyzed reaction हो या uncatalyzed reaction हो, there is no effect on enthalpy change. Right, so here we have 4 more MCQs, 8, 9, 10, 11. Now it's your turn to solve all these MCQs first, and then I will solve this. So we are going to start with question number 8. So what should be the answer, Arisha? C कह रही हैं Arisha. Okay, so bond breaking is an endothermic process, and bond making is an exothermic process. We know this. And for which change is it not possible from the equation to deduce whether the reaction is endothermic or exothermic? We know that if the bond is breaking, so that means it is an endothermic reaction. And if the bond is making, so that is fine, it is exothermic reaction. But Arisha, can you please see the C answer? It is actually bond breaking. This is endothermic. So it's easy for us to find out कि भाई ये bond टूट रहे हैं तो ये endothermic होना चाहिए. ठीक है, वो कह रहा है कि किसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि वो एंडो है या एक्सो है. ठीक है ना? जस्ट लुक एट ओवर हियर. यहाँ पर भी बॉन्ड आपके पास टूट रहा है, 2 क्लोरीन के एटम बन रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है. So this is also endo and this is exo. Here it is difficult to find out. देखें हाइड्रोजन आपके पास जो है इन बॉन्ड फॉर्म है, ठीक है ना, क्लोरीन का भी बॉन्ड बना हुआ है आपके पास, और जब ये दोनों टूटेंगे तभी आपके पास H और Cl का बॉन्ड बनेगा. So in this equation the bonds are
going to be break and then the bond are going to be make. जब तक हमारे पास bond energy मौजूद नहीं होगी, we cannot find out कि भाई ये exo है या endo है. तो इसके लिए हमें bond energies का use करना पड़ेगा और bond energies use करने के बाद हमें calculate करना पड़ेगा how much energy absorbed and how much energy released. Then we need to minus that and we need to find out कि भाई exo है या endo है. उसके बगैर हम देख के तो नहीं पहचान सकते हैं कि exo है या endo है. Is that right? Yes, sir. जी सर चलें, question number 9. अली असलम क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? सर डी D देना चाहेंगे. चलें चेक करते हैं. The diagram shows the energy profile of a chemical reaction. The two energy changes are labeled X and Y. Which statement about the reaction is correct? The activation energy of the reaction is X plus Y. Activation energy क्या होती है? Reactant से highest peak and this is only X. So this is absolutely not the right answer. The enthalpy change of the reaction is X. We know that this is enthalpy change, the difference between the reactant and product, and which is Y. This is not X. So this is also wrong. The enthalpy change of the reaction is X plus Y. Enthalpy change is X plus Y. Again, it is wrong. And they are saying that the reaction is exothermic, and we know that the energy of the product is lesser. So this is the right answer. Exothermic, right? राइट सर Okay, very good, Ali Aslam. Then question number 10. Yes, Iman Malik. What should be the right answer of this? Which of these processes are both endothermic? Sir, C. C for cat. Right, absolutely right. If you talk about combustion, so this is one of the example of exothermic combustion, exothermic fermentation. You have exothermic reaction. So the right answer you have is C, which is cracking. Cracking is one of the thermal decomposition. Photosynthesis is one of the endothermic reaction. So you can say that the C is the right answer. Both are endothermic. Very good. Yes, Ishal, can you answer the 11th one? The equation shows the reaction for the manufacturing of ammonia. Which change will decrease the activation energy? Oh my God, Ishal, it's too simple. A would be the right answer. Addition of catalyst would definitely decrease the activation energy, and मेरे ख्याल से ये सवाल तो सबको रटा हुआ होना चाहिए. Very good, बच्चों, very good. So here we have 1, 2, 3 more questions, and you need to solve this first, and then फिर मैं आपको इसके answers बताता हूँ और solution. जल्दी से start करते हैं. Start question number 12. Yes, Fatma, are you there? Yes, sir. Yes. So question number 12. B. B. Okay, so the formation of liquid water from hydrogen and oxygen is through to occur in 3 stages. These 3 stages, which stages would be exothermic? So this one, first one, you can see this is bond breaking. Bond टूटते हुए आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, तो ये endothermic होना चाहिए. Then in the second, you can see this, the bond are making, so definitely bond making is exo होना चाहिए. And then gas to liquid, it is backward reaction. So backward reaction भी आपके पास क्या होता है? Exothermic होता है. So the right answer should be D, 2 and 3. Right, बच्चों? जी राइट सर Right, sir. Yes, sir. Okay. Question number 13. sir. So question number 13 का Hafsa Kashif. A. A होना चाहिए इसका आंसर. Let's see. Nitrogen monoxide is an atmospheric pollutant that is formed in a car engine by the reaction between nitrogen and oxygen. The reaction is given, and you can see this. This is endothermic reaction by the enthalpy change. And which diagram represent the energy profile diagram? So we know that in endothermic reactions, products are always upward. So these two cannot be the answer, right? A हो सकता है, B हो सकता है. Then in endothermic reaction, activation energy and enthalpy change both are positive. The head of the arrow should be upward in both of them. So A should be the right answer. Very good, Afsa. Good job. Yes, Huzefa, can you answer the question number 14? Yes, Huzefa, can you answer this? Sir, D. D for doll, right? Yes. Okay, just look at over here. The nitrogen and oxygen reacts according to the equation. That's fine. The equation is showing that if you have 1 mole of nitrogen, it is going to react with 2 moles of oxygen to produce 2 moles of nitrogen dioxide. The enthalpy change for the reaction is 66 kilojoules per mole, right? When the reaction has been finished, you will see 66 kilojoules energy would be absorbed, right? If 2 moles of nitrogen, just look at over here, they are increasing the number of nitrogen moles. If 2 moles of nitrogen reacting with 2 moles of oxygen, so what will be the enthalpy change? You can see this, you have 1 mole
and 1 mole required 2 moles of oxygen. आपके पास अगर 1 मोल है नाइट्रोजन का तो उसके लिए 2 मोल्स चाहिए हैं ऑक्सीजन के. तो अगर आप 2 मोल कर रहे हो नाइट्रोजन को, so you should increase the number of moles of oxygen up to the 4. अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन करवाना है नाइट्रोजन का तो आपको ऑक्सीजन भी बढ़ाना पड़ेगी. अगर आपने ऑक्सीजन बढ़ाई नहीं है और सिर्फ नाइट्रोजन बढ़ा दिए तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस. आप नाइट्रोजन बढ़ा देंगे, वो बच जाएगी, आखिरी में रिएक्शन नहीं होगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन खत्म हो जाएगा. So you are actually making nitrogen excess which is useless for you. जब तक आप ऑक्सीजन नहीं बढ़ाएंगे वो नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं होगा, एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज नहीं होगी. द आंसर वुड बी सी, इट विल रिमेन 66, क्योंकि रिएक्शन तो अभी भी उतना ही होगा. एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिल रही है और आपके पास 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है. आपने जितनी नाइट्रोजन डाली थी वो बच जाएगी क्योंकि उसके लिए आपके पास ऑक्सीजन नहीं है फॉर फर्दर रिएक्शन. राइट बच्चों? Right, sir. अगर हम वो करते 4 ऑक्सीजन आते तो एंथैल्पी चेंज पे इफेक्ट पड़ता है या सेम ही रहता? फिर आपके पास रिएक्शन डबल हो जाता, रिएक्शन डबल होता तो डेफिनेटली एनर्जी एब्सॉर्ब भी डबल हो जाती. ठीक है सर, गॉट. ठीक है, आपने नाइट्रोजन को बढ़ा दिया है, नाइट्रोजन को बढ़ा तो दिया है आपने, लेकिन आपने ऑक्सीजन को नहीं बढ़ाया. जब ऑक्सीजन को आप बढ़ाओगे नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा, फर्दर रिएक्शन ही नहीं होगा. फॉर सपोज आप घर के अंदर जो है बना रहे हैं चाय, और चाय बनाने के लिए आपके पास जो है भाई दूध है 2 कप का, 2 कप का दूध है तो आपके पास 2 कप चाय ही बन सकती है. आपने पत्ती बढ़ा देनी है, आपने चीनी बढ़ा देनी है, आप कुछ भी कर लें, जब तक आपके पास दूध 2 कप और नहीं होगा 4 कप चाय नहीं बना सकते हैं. ठीक है, सर वो प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए ना. यस, यू नीड टू सी दिस कि अगर आपके पास इक्वेशन बता रही है कि 1 नाइट्रोजन का मोल है और उसको 2 मोल ऑक्सीजन के चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन. ठीक है ना. अब आपके पास जब ये सीन है तो आपको पता होना चाहिए अगर आप नाइट्रोजन डबल कर रहे हो तो आपके पास ऑक्सीजन भी 4 मोल्स होने चाहिए. ठीक है, आपने ऑक्सीजन बढ़ाया ही नहीं, आपने सिर्फ नाइट्रोजन बढ़ा दिया, तो सिर्फ नाइट्रोजन बढ़ाने का क्या फायदा? रिएक्शन सिर्फ नाइट्रोजन थोड़ी कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना उसके लिए. सर अगर नाइट्रोजन ना बढ़ाते ऑक्सीजन बढ़ा देते तो भी यही होता? उसके बाद भी यही होता है. नाइट्रोजन तो 1 मोल ही चाहिए उसको, 2 मोल ऑक्सीजन को. जब 1 मोल नाइट्रोजन खत्म हो जाता तो रिएक्शन खत्म हो जाता. राइट सर. इट मींस एक्सेस एंड लिमिटिंग. ठीक है, चलें. नेक्स्ट 3 questions are on the screen बच्चों, तो let's ready for this. Try to solve all these MCQs quickly. Yes, Hamza. What is the effect of a catalyst on activation energy and enthalpy change? Yes, Hamza, can you answer? हमजा, कैन यू हियर मी? चलें हमजा, ये कोई और बता सकता है इसका आंसर मुझे? कौन बताएगा इसका आंसर? सर मैं बताऊं? जी बताइए. सर बी. B should be the right answer. Let's see. What is the effect of catalyst on activation energy and enthalpy change? So definitely we know that when we are using catalyst, it is going to decrease the activation energy. So these two can be the right answer. तो ये दो तो नहीं हो सकते. And the enthalpy change will remain unchanged. B is the right answer. Very good, bete. Then 16. Hamza, can you answer this, bete? What should be the answer of this? अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम सलाम बेटे. सर इसका आंसर बी होगा ना? B होगा. Let's check कि इसका आंसर B हो सकता है. Let's see. They are saying that the energy profile for the forward direction of a reversible reaction is shown. This is saying forward direction, right? And which row correctly shows both the sign of the activation energy and the type of enthalpy change for the reverse reaction. उसने पूरा उल्टा कर दिया. वो कह रहा है इसको रिवर्स करके सोचो. So if you talk about reverse, तो भाई ये आपके पास reactant है और ये product है. This is exothermic reaction. And if you are making it reverse, तो भाई ये reactant हो गया और ये product हो गई, तो ये हो गया endothermic reaction. And if you talk about endothermic reaction, so the activation energy is always positive for that. So the right answer should be C sir. C should be the right answer. Okay, good one. चलें, reverse का word बहुत important था यहाँ पर देखना. चलें, नेक्स्ट 17 मैंने किसको दिया था सॉल्व करने के लिए? मनाहिल को. जी मनाहिल. Manahil, can you hear me? The energy profile diagram shows the pathway for the reaction with and without catalyst. Which energy change is the activation energy for the catalyzed reaction?
Anahil, can you answer this? I think it's quite easy. Maybe there is a problem. B for ball, right? Absolutely right. The B is the right answer. We already talked about this as a first MCQ of this class. Good, Manahil. Okay, so here we have 1, 2, 3, 4, 5 more questions. But so let's start this, and then the turn would be the challenge. So here we have the question number 18. Yes, Mariam, what should be the right answer of this, bete? D, sir. D. Let's see. How does a catalyst increase the speed of reaction? Again, it's too simple and you all can do this. Very good, Mariam. Absolutely right. It is going to decrease the activation energy. अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन आती है दैट्स वेरी गुड, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना पेपर के अंदर और खास तौर पे एमसीक्यूज के अंदर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि एमसीक्यूज में मिलते जुलते आंसर होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आप गलत आंसर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको सही आंसर दिया है तो इट्स एक्सीलेंट, माशाल्लाह, गुड जॉब। चलें क्वेश्चन नंबर 19। So Muskan, can you answer this? C. C. Okay, so the combustion of methane is exothermic. The equation is shown below, and what can be deduced from the fact that the reaction is exothermic? Fewer bonds, less energy involved, more bonds, more energy. Okay. अच्छा बच्चों देखो, आप लोग इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। इसमें ये बी नहीं होगा? यस बता रहा हूँ, आप लोग इसमें गलती कर सकते हो, और वो गलती क्या होती है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। बच्चों याद रखो, वी डोंट केयर अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए क्यों हमें क्यों इसकी परवाह नहीं है? उसकी परवाह ये है कि हर एक बॉन्ड की अपनी एनर्जी है, तो ज्यादा और कम बॉन्ड होने से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। एनर्जी ज्यादा रिलीज या एब्जॉर्ब होने से एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होता है। ये अपने पास जहन में क्लियर रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आता है और ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। बहुत बेसिक मिस्टेक करते हैं हम इसके अंदर, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। इट्स नॉट राइट। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगा। बॉन्ड कितने भी बने, कितने भी टूटे, वी डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, तो फ्यूअर बॉन्ड्स आर ब्रोकिंग, नो। मोर बॉन्ड्स आर मेक, नो। पहली फुर्सत में नहीं। एनर्जी की बात करेंगे, जस्ट लुक एट ओवर हियर, लेस एनर्जी इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड ब्रेकिंग देन इन्वॉल्व इन बॉन्ड मेकिंग। ठीक है ना, अगर आपके पास एनर्जी कम एब्जॉर्ब हुई है और रिलीज ज्यादा हुई है तो इट शुड बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस शुड बी द राइट आंसर। ठीक है ना, we always talk about the energy release and energy absorbed in bond breaking and bond making. We don't talk about the number of bonds formed or the number of bonds break. ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जैसे भी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ बात करें so it would be like this कि भाई कार्बन के 4 बॉन्ड्स थे और फिर यहाँ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स थे और ये हो गया आपके पास इस तरह, और फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें so it would be like this, और फिर अगर आप वाटर की बात करें so it would be like this। तो अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट करोगे तो it would be difficult for you। आप देखें यहाँ पर हो गए 4 बॉन्ड्स और यहाँ पर हो गया आपके पास 4 बॉन्ड्स, तो टोटल 8 बॉन्ड्स यहाँ बन रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो ये हो गया 4 + 4, तो यहाँ पर भी 8 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन बोथ साइड्स आर सेम। ठीक है ना, बॉन्ड्स की बात ना करें, आप बात करें एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्सॉर्ब की। ऑल राइट मुस्कान बेटे? यस सर, ऑलराइट। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 मुस्कान, उसका आंसर भी आपने ही देना है। ठीक है ना, तो देख लें इसको एक बार। 20 वाला आंसर हम देते हैं किससे? एमसीक्यू नंबर 20 का आंसर कौन दे रहा था? राफे दे रहे थे, आई थिंक। राफे, कैन यू आंसर दिस बेटे? जी सर, इज इट ए? Is it A? So which pair of statements about the combustion of carbohydrates and its formation by the photosynthesis is not correct? Not को जरा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज है जो कि आपको देखनी है एमसीक्यूज में ना। So the combustion, chemical energy converted into heat energy, that is the right thing, but the chemical energy converted into light energy is completely wrong. Photosynthesis chemical energy को light energy में convert नहीं करता है। ठीक है ना, that's the right, मतलब which is the wrong one। ठीक है ना? Yes, Muskan, can you answer MCQ number 21 again? Yes, Muskan, can you answer this? सर मैं डन। बेटे मुस्कान को देने दो। आई जस्ट वांट टू चेक कि मुस्कान को बात समझ में आई है या नहीं।
मुस्कान आगे गया. Yes, sir. It's It's जल्दी से मुस्कान, कोई मसला नहीं है, आप गलत देंगी तो मैं दोबारा सिखाऊंगा आपको. D. It's fine. D It's for D. doll, right? Yes. Okay. So just look at over here again. The burning of hydrogen is an example of exothermic reaction. Which statement explain this? Again, the number of bonds, we don't care about that. तो ये शुरू वाले दो तो आंसर नहीं हो सकते. More bonds form, more bond break, we don't care about that. Overall, the bond breaking are stronger than the form. अगर bond टूटने वाले stronger होंगे तो वो endothermic हो जाएगा ना. Overall, the bond formed are stronger than those broken. That absolutely right, Muskan. Very good. अब आपको मैंने एक चीज समझाई और आपको वो चीज समझ में आ गई and it feels a lot. Thank you so much for this. बहुत अच्छे बेटे, good job. Next, question number 22. Shoaib, can you answer this? The energy profile diagram for the reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid is shown. Which quantity of heat is liberated when 100 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube react with 100 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube of sodium hydroxide? Yes, Shoaib, what is the answer of this? देखें, number of moles निकालने का formula, we know that if we have concentration and volume in centimeter cube, so we know that the formula is we need to multiply concentration with the volume in decimeter cube. The volume right now is 100 over 1000, so it is 0.1. So the number of moles of both would be 0.1. Right, bacho? जी सर. Yes, sir. You can see this. If you talk about the reaction of HCl and NaOH, so they just react in 1:1 ratio and they will form sodium chloride and water, right, all the time. And you can even see in this equation that H positive ion reacting with OH negative ion will produce 1 water molecule. इसका मतलब ये है कि if you have 1 mole of this and 1 mole of this, it will produce 1 mole of this and 1 mole of this. And the energy, you can see this, the energy release, which is 54 kilojoules per mole. It is saying कि अगर आपके पास 1 mole HCl का या 1 मोल NaOH का या 1 मोल NaCl का बनता है या टूटता है तो उसमें 54 किलोजूल्स एनर्जी रिलीज होगी पर मोल, यानी कि 1 मोल में 54 एनर्जी रिलीज होगी. सो अगर आपके पास 1 मोल में बच्चों 54 किलोजूल्स एनर्जी रिलीज होती है तो 0.1 में कितनी होगी? इट शुड बी 0.5. not 0.5, it is 5. You can solve Sir, this. 5.4 kilojoules. And this over there and x over there, so it would be x is equals to 0.1 into 54 will give you 5.4. Right, bacho? Right, sir. Right, sir. Yes, sir. Okay, so here we have only 2 MCQs और जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किससे. So bachcho, here we have question number 23. The question number 23 is saying the energy profile diagram for the reaction between hydrogen and chlorine is shown. Which information about this reaction does the diagram shows? We know that this is exothermic reaction because the product is downward and the type of reaction is exothermic. So these two can be the right answer, these two cannot. Or enthalpy change, क्योंकि product नीचे है तो head नीचे होगा, it should be negative. So the right answer will be C. Absolutely right, Shayan. Good job. Yes, Tuva, what should be the answer of the 24th MCQ बेटे? D. D आंसर होगा. तुबा कहती हैं इसका आंसर D होगा. So let's see बच्चों, इसका आंसर आपके पास D होना चाहिए या नहीं. So the diagram shows the reaction pathway for the reaction without the use of catalyst. So when which information correctly describe the effect of the catalyst on the activation energy and enthalpy change? We already talked about this, and this is very important thing to remember. Activation energy is always going to be decreased, and without changing the enthalpy change. Absolutely right, Tuba, you are absolutely right. Good job. So here we have some more questions, but you just take a picture of this. This will be your homework. Just take a picture of this. 1, 2. Right, sir. Have you done, bacho? Yes. Take a picture of this Yes, as sir. well. Done, bacho? Done, sir. Yes, sir. Just take a picture of this. Clear, some आपकी बहुत आवाज कट रही है.
सर मैं कह रहा था मैं पीछे वाले की तस्वीर नहीं ले पाया। ठीक है, कोई भी भेज देगा आपको उसको, डोंट वरी अबाउट दैट। ग्रुप पे कोई शेयर कर देगा जिसने पूरी ले ली होंगी ना। ठीक है, तो जल्दी से इसकी भी ले लीजिए, इसकी भी ले लीजिए बच्चों, जल्दी से बच्चों। डन। डन Yes, सर। sir. इसकी भी ले लीजिए। डन सर। इसकी भी। डन सर। एंड दिस इज द लास्ट वन। डन बच्चों। डन सर। G. Sir. So this is the Done, sir. chapter energetics Yeah. that we